Good morning, everyone. Welcome to IS Prerequisite. Let us look at some important articles from Indian Express. Today's date is 8 February 2023. तो पहला आर्टिकल है पेज नंबर 15 पे इंटरनेशनल रिलेशंस से सी राजा मोहन ने इसे लिखा है. आर्टिकल है एज एशिया आर्म्स यूरोप. कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का? साउथ कोरिया एक मेजर आर्म्स सप्लायर के रूप में इमर्ज हो रहा है यूरोप में. जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसमें साउथ कोरिया एक इमरजेंट आर्म सप्लायर के रूप में उभर रहा है. तो इससे हम कंक्लूजन्स कुछ निकाल सकते हैं कि जो एशिया है, एशिया हैज़ लॉन्ग सीज टू बी अ पैसिव थिएटर फॉर राइवलरी अमंग द वेस्टर्न पावर्स. दूसरा, जो आइडिया था एक कि यूरोप और एशिया दो सेपरेट स्ट्रेटेजिक थिएटर्स हैं, ये जो आइडिया है ये एक ब्लर हो रहा है. थर्ड, दैट यूरोपियन एंड एशियन सिक्योरिटी आर डीपली इंटरकनेक्टेड, ऐसा खुद नाटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है. और फोर्थ पॉइंट हम देखें, पहले ऐसा होता था ट्रेडिशनली कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मजबूर करते थे आर्म्स आर्म्स पे स्पेंड करने के लिए. लेकिन अब क्या हो रहा है, जो आर्म्स का बाजार है देयर दैट इज़ नो लॉन्गर एक्सक्लूसिवली वेस्टर्न. एशियन पावर्स आर नाउ important producers and traders of west weapons. जैसे कि चाइना इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएस, रशिया एंड फ्रांस. अब इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया भी एज एन आर्म्स एक्सपोर्टर काफ़ी रेस में बढ़ रहा है आगे. जैसा कि हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस हुआ, और जो लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडियन आर्म्स एक्सपोर्ट्स का, वो कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं है बट यूएस को सबसे ज़्यादा जाता है. तो ये आर्टिकल हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट था. हम इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स में इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं कि हाउ द डायनामिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर इज विजिबल. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 18. important from perspective of society, the age of marriage, the question of the age of marriage. so इसकी एक बार हम अगर हिस्ट्री देखें, अगर इवोल्यूशन देखें, तो at independence the minimum marriageable age was 15 years for females and 18 years for males. 1978 में इसको इंक्रीज कर दिया गया 18 years फीमेल्स के लिए, 21 years मेल्स के लिए. और 2008 में the law commission came out with a report which stated that the minimum marriageable age for both men and women should be 18 years as both are considered eligible to vote as citizens at the time. ये सिर्फ एक रिकमेंडेशंस थी, इसको लागू नहीं किया गया. अभी हम यही फॉलो करते हैं. आपका होमवर्क है कि आप कमेंट्स में टाइप करें कि वोटिंग एज 18 किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से की गई थी. अब इसमें देखें हम मैरिज एज में, तो लॉज कौन से इन्वॉल्व हैं. तो पॉक्सो एक्ट में क्या होता है? इट क्रिमिनलाइजेज द सेक्स बिटवीन अ माइनर एंड एन अडल्ट, but the law does not recognize a minor's consent as valid. The sexual assault under POCSO is a non-bailable and a cognizable offense. ये भी आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे कि नॉन बेलेबल और कॉग्निसेबल का क्या मतलब होता है. Then the other law that deals with this, the age of a marriage, is the Prohibition of the Child Marriage Act, which says that the child marriage are illegal but not void. Illegal तो हैं लेकिन void नहीं है. Then what is the debate on age of marriage among Muslims? Muslim personal law जो है, it allows marriage after the bride has attained puberty. It is irrespective of the age as against the law. So generally it is around 15 years. So there is a grey zone, a gap between Muslim personal law and the special laws prohibiting child marriage or sexual activity that we saw here. They define 18 years as the marriageable age for the female. This puts a shadow of criminality on such marriages. So that is a major issue that is being talked about in Assam. Now what the experts have said about it. The National Commission for Protection of Child Rights, or the NCPCR, has argued that the personal laws cannot override the special penal statutes.
Okay. Then the central government had formed a committee known as Jaya Jetli Committee, which recommended that the marriageable age for women should be increased from 18 to 21 years. Why? In light of factors such as reproductive health, education, etc. So this can be used as a fodder if the question comes in the mains examination about the age of the marriage, or it should be increased or not. What are your views? What are your point of views? On that we can use this. Moving on to the next article, we have Primary Agricultural Credit Societies, or the PACs, on page number 18. That comes under the body in news. Now, what is the context? The Union Budget has announced rupees 2,516 crores for computerization of 63,000 primary agriculture credit societies over the next 5 years. So, why this step was taken? This step was taken to increase the transparency and accountability of PACs. Now, what are PACs? These are village level cooperative credit societies. These act as last link in the three-tier structure of cooperative credit facility providers. The three-tier structure looks like this. On the top, the head is the state cooperative banks, or the SCBs. In the middle are the district central cooperative banks, or the DCCBs, and at the lower level are the primary agriculture credit societies. So now village can have a multiple PACs. A single village can have multiple PACs. Now what are the functions or the features of the PACs? They deal with the short-term lending, also known as the crop loans. And these loans are at highly subsidized rates. For example, if the bank is providing at the 7%, then the central government will give the subsidy of 3%, the state government will give the subsidy of 2%, and the effective loan price or the loan interest rate that the farmer has to pay is just 2%. So very much big relief for the farmers. Now this acts as an easy access to formal credit access, and this involves minimal paperwork. So that's why this becomes an effective opportunity for the farmers to garner loans from the formal credit sources. And also it acts as a last mile connectivity to the farmers, which prevents them from going into the hands of the non formal credit sources. Now what is the need for computerization of PACs? First of all, to bring the uniformity, as the SCBs and the DCCBs are already connected to the core banking solutions that the banks provide, but the PACs are not yet connected. So this will bring uniformity in these cases. Then this would allow us to hold the corruptions. Like if there is a computerization, there is a data being stored, there is a high chances that corruption is brought onto the lower levels. Also, we can have a real time monitoring, and we can have a look about कौन से जो PACs हैं लॉस में हैं, कौन से PACs are working good, and we can have a framework that जो बचाए कि PACs कैसे लॉस में ना चलें और इफेक्टिवली अपना काम करें. So these were the important articles from the perspective of UPSC examinations. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. Thank you.